Hello Pakistan from Turkey. से पूछेंगे कि हाउ डिड ही गेट टू मैरी अ पाकिस्तानी गर्ल एंड हाउ वाज हिज फैमिलीज रिएक्शन, हाउ वाज इट बीइंग इन पाकिस्तान, हाउ डिड ही फील, हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड हाउ इज इट बीइंग मैरिड इनटू अ डिफरेंट कल्चर। अंदर कुछ और ही चल रहा था उनके माइंड में। फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा शॉक में चले गए, सरप्राइज थे, शॉक इन द सेंस सरप्राइज कि आपकी तरजीह होनी चाहिए नॉट द कल्चर बट योर बिलीफ सिस्टम, रिस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान सईद सयारा, आपको वेलकम करती हूँ टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ कॉकटेल टुडे। आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल हैं। स्पेशल इसलिए बिकॉज वन इन पर्टिकुलर रीज़न ही इज़ माई हस्बैंड, सो वेरी स्पेशल फॉर मी। और आप लोगों के लिए ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है इसलिए बिकॉज इनके मुल्क के लोगों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, इनके ड्रामा हम बहुत शौक से देखते हैं और वी ओन देम, वी लव देम and of course we love their dramas. Ishq Mamnu, Ertugrul, Osmanlı, Ottoman Empire. So I hope that rings a bell now. Yes. So हम welcome करते हैं जिहान सयार को, my very own husband, तो my one and only husband. तो जिहान सयार जो हैं वो half Albanian हैं, half Turkish हैं, is a nurse by profession. और आज हम जिहान से पूछेंगे कि how did he get to marry a Pakistani girl and how was his family's reaction, how was it being in Pakistan, how did he feel, how was the experience and how is it being married into a different culture. So हम खुशामदीद कहते हैं जिहान को। अस्सलाम वालेकुम जिहान, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Mektiko. आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। So Artık ben half Pakistani. yes, जिहान अब आधे अल्बेनियन, आधे तुर्क और आधे पाकिस्तानी हो चुके हैं। Tebrikler. Teşekkür ederim. Congratulations on that. Thank you. Biz nasıl tanıştık? Ondan bahsedeyim önce. Yes, so we're gonna start with how Jihan and I met. Kıbrıs'ta üniversite okuyordum. Sen de orada Kıbrıs'ta üniversite okuyordun. Çalıştığım yere arkadaşın Asife vardı. Onunla beraber çalışıyorduk. Buradan selam söylüyorum Asife'ye. Onun हम yanına, आसिफा को सलाम कहते हैं यहाँ से from Turkey. onun yanına geliyordun. Ben de arkadaşımın arkadaşı sana çay kahve ikram ediyordum. Bu bir taktik. ये Vay, tactic tactic. अंदर कुछ और ही है, मैं आपको explain करूँगी once Jihan explains it to us. Sonra tanıştık. Baktım senin ahlak güzel. Çok hassas, tatlı baby gibi. Benim kriter için ideal. Sonra dedim ki why not, neden olmaz. So Jihan ने अभी जो फरमाया है वो मैं आपको translate करूँगी। Jihan and I were studying in Cyprus और जिहान जिस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते थे उधर मैं जाती थी to see one of my very close friends आसिफा, और जिहान would offer me चाय and Turkish coffee, कहवे जो है after the meal I would order। उसके बाद टर्किश कल्चर में एक कस्टम है कि ये लोग खाने के बाद आपको चाय या कॉफ़ी जो है वो एज अ गिफ्ट ऑफर करते हैं। तो जिहान लाइक ही मेंशन दिस वाज हिज टैक्टिक बट अंदर कुछ और ही चल रहा था उनके माइंड में। But for Jihan, what he observed in my personality was what he wanted in his partner, and that was enough for him, despite the cultural difference and the language barrier. Sorry. So, despite both the differences, the cultural and language difference, जिहान के लिए जो आइडियल था वो थी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं और वो इम्पोर्टेंट थी। Evet Cihan. So sadece senin için dil ve kültür o kadar Ön önemli planda olmadı. değil, evet. Yani önceliğim benim elhamdülillah Müslümanım. Zor olmadı mı? Din önemliydi benim için, ahlak önemliydi. Yani dil olarak biraz zorlandım. Bende İngilizce yok. Hala öğrenemedim, özür diliyorum. Eşimden जिहान सॉरी कह रहे हैं कि जी मैंने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखी। तो मैंने जिहान से ये पूछा कि अगर आपके लिए क्या ज़ुबान और कल्चर दोनों मुश्किल नहीं हुई, तो जिहान ने कहा कि नहीं ऑफ कोर्स हुई, इन द सेंस के बाद में वो चीज़ें बाद में थी। फॉर हिम द प्रायोरिटी वाज आवर बिलीफ सिस्टम शुड बी द सेम। हमारा क्या बिलीफ सिस्टम सेम था और हमारा दीन, उसको तरजीह दी जिहान ने, और इखलाक
dil olarak zor oldu ama kültür olarak zorlanacağımı düşünmedim. सिर्फ जो है कल्चरल डिफरेंस को लेकर जिहान wasn't concerned, but regarding the language barrier that we had, because मेरी टर्किश उतनी नहीं थी तब, अभी भी उतनी नहीं है, but इतनी है कि मेरे शौहर को मेरी समझ आती है. So sadece sen bana anlıyor. O kadar Türkçe var bende şimdi. O zaman o kadar diyor. Artık senin Türkçe perfect. Don't worry. Green Forest, ladies and gentlemen, support your wife. Kültür olarak zorluk çekmedik. Sadece? Dilde biraz zorluk çektik ama elhamdülillah şu anda açtık. Yani Alhamdulillah. Okay, so ne zaman sen ailen de söyledin, haber Evet. verdin. senin Kız baba arkadaş var ama Türk değil. evet था. So the main question is कि जिहान की फैमिली का क्या ख्याल है. जिहान के लिए तो जो पर्सनालिटी में वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाह रहे थे हो उनके पार्टनर में, वो जिहान के लिए तो ठीक था कि ठीक है, वाई नॉट, कि ये चीज़ें पूरी उतर रही हैं ईमान पर. बट क्या उनकी फैमिली वाज ओके विद हिम अप्रोचिंग a girl out of culture? तो जिहान से पूछते हैं. Evet जिहान. yani benim ailede ilk yabancı gelin aldık öyle söyleyeyim. Zaten benim potansiyel var farklı hayat için. Tamam. Onlar sorun yapmadı çünkü bana güvendiler. Ben de seni tanıdım ve sana güvendim. Bu yüzden aileme söyledim. Dedim Pakistanlı bir kız arkadaşım var. İlkten şaşırdılar çünkü Pakistan शक में चले गए जिहान की फैमिली. So I'm going to explain a little bit जिहान. So जिहान के लिए जिहान की फैमिली को जब जिहान ने बताया तो जिहान की फैमिली obviously at first they were a little surprised, and but they trusted him with his choice. So for him it wasn't an issue as such. जैसे कभी कभार बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है कुछ फैमिलीज़ में, उस तरह से नहीं था. रीज़न बीइंग क्योंकि जिहान की फैमिली also because जिहान के वालिद इज़ फ्रॉम अल्बानिया. जिहान के अब्बू जो हैं वो अल्बानियन हैं और जो वालदा हैं वो तुर्क हैं. बट अगेन उनकी जो वालिद की साइड है वो टर्की में ही पली बड़ी हैं, तो इसलिए उनका लैंग्वेज बैरियर नहीं था जिहान के पेरेंट्स की जहाँ तक बात है. मगर जिहान की फैमिली में दिस वाज द फर्स्ट टाइम someone completely out of culture was entering the family or was going to enter the family. So again, yes, coming back to Jihan, arkadaş çevremde şaşıranlar oldu. friends भी बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए. सरप्राइज थे, शॉक in the sense Türkiye'de surprise थे. Türkiye'de kız mı kalmadı yani finish. Neden yabancı? तो bizim de öyle yani हमारी तरफ मेरे घर पर भी ये बोला गया था कि पाकिस्तान में आपको लड़का नहीं मिला, और जिहान की तरफ भी कुछ दोस्तों ने कहा कि टर्की में लड़कियां खत्म हो गई थी. तो जी जिहान. Ben sorun yaşamadım. Arkadaşlarım da sonradan seni tanıdı. Onlar da benden fazla belki seni seviyorlar şu an. Yani her şey çok güzel gidiyor elhamdülillah. Sorun yaşamadık. ओके. सो जिहान के लिए इतना इशू नहीं हुआ, बस दोस्तों को लेकर या कुछ फैमिली मेम्बर्स को लेकर ये था कि you know, they were surprised like I mentioned earlier, but for them once we started communicating through Instagram, through WhatsApp, तो हमारी जब बातचीत होना स्टार्ट हुई तो I think they were pretty relaxed as well. Sorun olmadı yani. Evet. O kadar. Normally savaş oluyor bazen. Bazen evet. Ama aynı kültürde de oluyor ki. Evet kesinlikle. तो हमारे कल्चर में अगर हम आउट ऑफ कास्ट की शादी करें कभी कभार, या कभी कभार सेम कल्चर के अंदर आप दूसरे घराने में जब शादी करते हैं तो भी बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरली कि आप दूसरे कल्चर में शादी करें तो ही प्रॉब्लम्स होंगी या डिफरेंसेस आएंगे. कभी कभार बाज़ औक़ात सेम कल्चर में भी शादी जब आप करते हैं तो बहुत सी डिफरेंसेस और बहुत से डिफरेंसेस के साथ साथ कभी कभार मसाइल भी पेश आते हैं लोगों को. So Jihan, sonra ailendedim ki tamam, sana Okay. güvendim. Evet. जिहान को ट्रस्ट कर रही थी उनकी फैमिली विद हिज चॉइस, so they were okay. So बात आई शादी पर, तो फिर जिहान से पूछते हैं en sonunda Pakistan geldi. Düğün Evet. için. Bu yıl içinde geldik. düğün için, düğün diyoruz değil mi? Evet doğru. Pronunciation में ये अब इतनी मुकम्मल परफेक्ट नहीं हुई हैं, but yes, we're getting at it. Evet. Nasıl hissettin insanlar olarak, kültür? Pakistanlı people Yemek. buradan teşekkür ediyorum. Çok sıcakkanlı Bloody. तो हमारे लोग बहुत वेलकमिंग और बहुत वार्म हैं,
and thank you to the Pakistani people from Jihan's side for being so welcoming and so warm. Ji Yani Jihan. ilkten biraz fear oldu. Korktum. Çünkü bilmiyorum nasıl geleceğim. Vize belki problem ama vizede sorun olmadı şükür. Siz bizim için rahat, basit yapmışsınız. Ben azıcık anlatacağım. Evet. So जिहान के लिए जब हम इस टॉपिक पे अब आते हैं कि जिहान अब पाकिस्तान आए, उनकी फैमिली की तरफ से सब सही हो गया, मेरी फैमिली ने भी जो है वो कहा कि जी ओके थम्स अप। तो उसके बाद जब पाकिस्तान आने का टाइम आया, शादी का टाइम आया, तो जिहान की क्या फीलिंग्स थी रिगार्डिंग दैट एंड जिहान का क्या तजुर्बा था। तो जिहान को ये कंसर्न ज़रूर थी कि वीज़ा कोई इशू तो नहीं, वीज़ा के रिगार्डिंग कोई इशू तो नहीं होगा, किस तरह से यू नो लैंग्वेज बैरियर कंसर्न terms of communicating with my side of the family कैसे होगा, but I think he was relaxed because he had met my father earlier. He was relaxed because I was gonna be there of course. So sen biraz rahatla çünkü baba tanıştın sen önce. Evet, daha önce öyle tanıştım. Ben de var, ben Sen var orada, zaten. evet kesinlikle o en büyük etken. Ondan sonra Vizada işte sorun olmadı. evet yola çıktık. 2 gün 3 gün için geldi senin viza değil mi? Evet. Jihan का वीजा 3 दिन में 2 से 3 दिन में आ चुका था and it was very easy process and I hope कि हमारे पाकिस्तानी जो है hamaरे लोगों के लिए भी आसानी की जाए to travel to Turkey. I hope so. Umarım bizim insanları için de memleketi için de İnşallah. sorun olması. İnşallah. Ondan Evet. sonra geldik. Nasıl Farklı, tecrübe ettin? farklı Neyi fark- kültür ve dil sorunum vardı. Biraz orada korktum. Dilim olmadığı için. Sonra herkese her I was a zaman little scared. smile verdim every time. होश गेल्डनेस ओस्मानला तो हमारे क्योंकि टर्किश ड्रामा बहुत देखा जाता है तो जिन जिन लोगों को पता चला कि जिहान was Turkish they were actually communicating with him in a little bit of Turkish here and there and Jihan was very surprised. Jihan came with his sister, he couldn't come with his whole family but he came with his sister. So as I said earlier as well हम तुर्कों से बहुत प्यार करते हैं and Jihan saw that as well. So Jihan sen gördün zaten hissettin biz Türkleri çok seviyoruz. Evet. O yüzden sonra ben daha rahat oldum. Yabancı gibi hissetmedin. So you Yabancı didn't gibi feel like a hissetmedim. foreigner Yani there. sanki Türkiye'de gibi hissettim. Güzeldi. Sadece sütlü çay yemek farklı geldi. Evet. Bir Evet. ay Türk çayı içemedim. Ama sütlü çay da çok güzel. Yani özlemedim dersem yalan söylerim. Özledim yani. Yemeklerde biraz acı fazla kullanıyorsunuz. Bize farklı geldi. Sizin kültürde mesela salça yok, bizde salçayla yapılıyor. Bir o farklılık vardı ama ben çok yemek seçmedim. So जिहान के लिए सिर्फ खाने को लेकर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा मुश्किल नहीं कहूँगी बट डिफरेंस पेश आई थी. The cultural difference that he faced was regarding our food. Obviously because हमारा खाना जो है is full of spices. पाकिस्तानी चाय जो है वो हमारी दूध की होती, दूध वाली चाय पीते हैं हम और ये लोग पानी वाली चाय पीते हैं. So that was the difference and I think Lahore की हवा as well. But regarding the people, he had a pretty good experience and I think we were very lucky from मेरी फैमिली से लेकर जिहान की फैमिली और हमारे फ्रेंड्स और इवन हमारे जो शादी में लोग शरीक थे, from everyone who was involved in the wedding, from our photographers, जो wedding shooting की team है, a big shout out to wedding shooting की team, our photographer'lar, bizim arkadaşlar, bizim ailem, hepsine Herkes her şey yardımcı çok oldu. şanslı biz, evet. Evet. Teşekkür ediyorum buradan hepsine. जिहान सबको बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं. Sonra düğüne geçersek, düğün çok güzeldi. Elhamdülillah. Senin babaya buradan teşekkür ediyorum. Allah So he had razı fun olsun. at the wedding and the wedding was beautiful. Yani bizim storylere bakan herkes gelmek istedi. Keşke orada olsam. जिहान की जो बहन है मेलिका, she's a photographer, so everyone was following her from my side, from his side. तो जो नहीं आ पाए शादी पर उनको बहुत खुशी हुई and they were very entertained throughout the Instagram stories. Reason being they found, I think Pakistani ve Hindustan'ın kültür çok renkli, Evet. canlı. तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखकर कि बहुत फुल ऑफ कलर, फुल ऑफ लाइफ है. पाकिस्तानी इंडियन वेडिंग्स जो हैं वो दोनों बहुत फुल ऑफ एवरी कल्चर ऑफ कोर्स इज़ वेरी रिच in its own way. Hey Sakib my dear, जी I'm asking you. Yes, I can. Do you like
my culture. I love Turkish culture. I think everybody loves the Turkish culture in Pakistan because like I said, sen gördün zaten, hissettin. Türk kültür sadece değil, biz insanları da çok seviyoruz. Çok saygı Teşekkür ederiz. veriyoruz. Görmedin mi? Gördüm. Every culture has its differences. And again, like I said, it's beautiful in its own way. But Pakistani wedding के regarding जो मैंने जिहान को पूछा कि उनका experience कैसा था was again like he mentioned very vibrant, full of colors, and the people were very warm and welcoming. Again, जो जिहान ने पहले भी mention किया उनका तजुर्बा लोगों को लेकर कैसा था तो that's how it was at our wedding as well. And outside जो बाजार में या कहीं बाहर भी हम मिले लोगों से तो उसका भी जो तजुर्बा था वो अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह. So thumbs up to the Pakistani avam for that. And Cihan, en sonunda ben sana soracağım. Sen insanlara ne mesaj verecek, Ne neyi öneririm? söyleyecek? Evet. Farklı kültür için, evlenmeyin için. Don't fear. Don't fear of getting married in. मैं Cihan को ये Yani पूछना kültür चाह रही हूँ. is not first Priority, tercih. priority. Yani öncelik love, trust, Respect. respect. Bu üçü varsa gerisi basic. Ben buna inanıyorum. Bizim başlarken konuşamıyorduk hatırlarsan. Remember, Hı hı. translate çeviri yapıyorduk. Şimdi normal iki insan Evet. gibi rahat sohbet edebiliyoruz. So I'm going to translate that. So जिहान कह रहे हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कल्चर नहीं होना चाहिए. जिहान और मैं जब मिले थे तो हम लोग ट्रांसलेशन जो है गूगल ट्रांसलेट से बात करते Yeah. थे और आपकी मेन प्रायोरिटी आपका बिलीफ सिस्टम अगेन लाइक ही मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड कि आपकी तरजीह होनी चाहिए नॉट द कल्चर बट योर बिलीफ सिस्टम, रिस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट. इफ दीज थिंग्स आर देयर देन do it, don't fear. तो आपका कल्चर और आपके लैंग्वेज बैरियर कभी भी रास्ते में नहीं आना चाहिए. और आई थिंक देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लव डज नॉट नीड अ लैंग्वेज. तो here we are, a representation, a real live representation of that, of different culture, different upbringing. Everything was different, from language to everything in life was very Hobby different. choice, single. Yeah, our hobbies are very different. Hobby. Hobbies are very different. Our choices are very different. But alhamdulillah, we're very happily married. Allah का शुक्र है. And पे हम end करेंगे अपने episode को. Thank you for watching us. Thank you so much, Cihan, You're for being welcome. with us on Ben today's teşekkür- episode. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica Buradan ederim. herkese You're most selam welcome. gönderiyorum जिहान की तरफ से Pakistan'a. बहुत सलाम सबको पाकिस्तान में. और हम यहाँ पे एपिसोड को एंड करेंगे. बहुत शुक्रिया. आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं हम. See you again. See you again. Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़.